प्रवीण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम गेट 2004। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन? द रियल पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज, ये हमें 4 ऑप्शन गिवन है। ओके, नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। ओके, वी हैव गिवन दैट 4 raised to power 4 minus iota. Okay, so let this value can be assumed it is small z, as we know that the complex number is represented by small z. So it is z is equal to 4 raised to power 4 minus iota. Okay, now this can be written as is equal to 4 raised to power 4 into 4 raised to power minus iota. And what is the value of 4 raised to power 4? It is 256. So it's 256 into 4 raised to power minus iota. Okay, now assume that this number is z1. Okay, this is z is equal to 256 into z1. Okay, into z1, where z1 is equal to 4 raised to power minus iota. Okay, now taking log on both side, taking log on both side. Okay, so we get log of z1 is equal to log of 4 raised to power minus iota. Now using the property of log of a raised to power b, it's b log of a. Okay, so we find out that here it is log of z1 is equal to minus iota and natural log of 4. Now using log of z with base e is equal to log of modulus of z plus iota and argument of z. Okay, so ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे. So we find out that log of natural log of z1 is equal to minus iota log of 4 का modulus, it is 4 का modulus 4 रियल नंबर है, प्लस आयोटा इंटू ई. आयोटा रियल पार्ट की कोरस्पोंडिंग आर्गुमेंट कितना होता है? 0. तो ये हमारे पास ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0. सो वी फाइंड आउट दैट log of z1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा log of 4. ओके, नाउ टेकिंग एंटी लॉग या एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, वी फाइंड आउट दैट इट्स e raised to power, इट्स z1 इज इक्वल टू e raised to power log of 4 इंटू आयोटा, और यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं. नाउ यूजिंग आइलर आइडेंटिटी क्या होती है? ई रेज टू पावर आयोटा थीटा या माइनस आयोटा थीटा, इट इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. ओके, सो इट इज z1 इज इक्वल टू ई कोस ऑफ थीटा. थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? log 4. सो यहाँ पे आप नेचुरल लॉग भी ले सकते हो आप यहाँ पे. ठीक है, तो इट्स नेचुरल लॉग कोस ऑफ 4 minus iota sine of natural log of 4. Okay, now putting the value of z1 here, we find out that z is equal, या फिर इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1. Okay, now equation 1 is give z is equal to 256 into z1. What is the value of z1? It is cos of log of 4. Okay, and minus iota sine of log of 4. Multiplying 256, its z is equal to 256 cos of natural log of 4 minus 256 sine of natural log of 4 iota. Okay, so he asked about the real part. What is the real part? Comparing with z is equal to alpha plus iota beta. So alpha is real part. So from here real part alpha is equal to, it's 256 cos of natural log 4. Okay, so this is the answer. So answer is A. And if he or she
ask about the imaginary part. So imaginary part, what is the value of beta? Value of beta is minus 256 sine of log 4. So it is the value of beta. Okay, if this question is of multiple choice of multi correct, then if it is the D option is like that, इसमें तो आप इसने रियल पार्ट ही पूछा है, अगर आप इसमें इमेजिनरी पार्ट पूछा होता तो इसका ये आता है इमेजिनरी पार्ट. ओके, सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2004. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. सो if iota raised to power iota up to infinity is equal to alpha plus iota beta, then which of the following is are true? And this question is multi correct. एक से ज़्यादा इसके आंसर ठीक हैं, ठीक हो सकते हैं. ओके, एक या एक से ज़्यादा. ओके, नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट. ओके, what we have given, it's alpha plus iota beta is equal to e iota raised to power up to so on infinity. Okay, now taking log on both side, taking log on both side, we get it is equation number 1. So here we find out that log of alpha plus iota beta is equal to log of iota raised to power iota and up to so on infinity. Now again using the property of log of a raised to power b, it's b log a. ओके, सो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे यहाँ पे. तो ये क्या होगा हमारे पास, log ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर आयोटा एंड टू सो ऑन इन्फिनिटी इनटू log ऑफ आयोटा. एंड बाय इक्वेशन 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू पावर आयोटा इन्फिनिटी? इट्स अगेन अल्फा प्लस आयोटा बीटा. सो इट implies that log of alpha plus iota beta is equal to alpha plus iota beta into log of iota. Now using log of alpha plus beta, log of z is equal to log of e modulus of z plus iota argument of z. अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे. सो हेयर it is log of, what is the modulus of this function? It is alpha square plus beta square under root. Okay, plus iota. What is the argument of this function? It is tangent inverse beta by coefficient of iota, imaginary part upon real part. Okay, is equal to, it is alpha plus iota beta. And what is the value of log iota? It is log of, what is the modulus of iota? It's 1 plus iota, and argument of iota, it is here, then this angle, it is pi by 2. Okay, so here we know that the value of log 1 is 0. So its complete is iota into pi by 2. Multiplying the iota pi by 2 with alpha plus iota beta, we find out that it's minus beta pi by 2. Okay, into iota plus iota alpha pi by 2. Okay, so here we find out that comparing imaginary and real part, by comparing real and imaginary part. ठीक है, so this is real part and here this is real part. So what we have given, log of अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम रूट को 1/2 पावर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इट इज माइनस बीटा पाई बाय 2. ओके, सो इफ यूजिंग प्रॉपर्टी दिस 1/2, ओके, ये आगे आ गया और 2 से 2 कैंसिल यहाँ से. ओके, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, वी फाइंड आउट दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इट्स e raised to power माइनस beta pi. So what is the value of alpha square plus beta square? It's minus beta pi. So option B is correct. Now comparing imaginary part. So here it's tangent inverse beta by alpha
इज इक्वल टू आयोटा, कंपेयरिंग है तो अल्फा पाई बाय 2. ओके, नाउ taking tangent on both side we find out that beta by alpha its tangent alpha pi by 2. Okay, so what is the value of beta by alpha? Its tangent alpha pi by 2. It's alpha by beta, it's beta by alpha, so option D is also correct. So this is the solution. Answer of this question is B and D. Okay, second and fourth are the आंसर. ओके, सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, किसी स्टूडेंट ने पूछे थे मेरे से. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.